Just look at the sunset on the right of your screen, friends. Just look at that. This is down the Khandala Valley. For a biker, sunset, sunrise, riding along the ocean, riding on the open highway gives us true joy. Absolutely beautiful. Let me just bring it in front of you. Look at this. Just look at this. Just one word comes to our mind. Dil mange more. Beautiful. Once more! Once more! Once more! हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। और आज हम करने वाले हैं बाइक राइड टू लोनावाला। सी फॉर मुंबईकर्स, लोनावाला खंडाला इज़ लाइक अ सेकेंड होम। वी नेवर गेट टायर्ड ऑफ गोइंग टू दैट प्लेस। इवन इफ इट इज़ 10 times a year वी विल गो। इट डजेंट मैटर विच मंथ इट इज़, गर्मी हो, बारिश हो, ठंडी हो। ओके, वी लव टू गो टू दैट प्लेस। सो वी विल सी दैट प्लेस, वी विल राइड टू दैट प्लेस। बहुत मज़ा आने वाला है। And also we will talk about some 7 or 8 safety tips. A motorcycle rider should basically be aware of these safety tips. These are not the physical riding tips. जो मोटरसाइकिल कैसे चलाना है वो नहीं है, उसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा which will be a physical safety tips while riding a motorcycle. But this is basically the mental side of things which you actually should take care while riding your motorcycle. ओके, सो विदाउट डीलिंग फर्दर लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू इट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मुझे खुशी होगी आपके लिए और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊँ। ओके, विदाउट डीलिंग फर्दर लेट्स स्टार्ट। जस्ट लुक एट दिस हाईवे फ्रेंड्स, जस्ट लुक एट दिस हाईवे। मुझे बोलो आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं? मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। So we are heading towards Khandala now, Lonavala, Khandala, twin hill stations. It's a second home for Mumbaikars, and बहुत मज़ा आएगा. So we will also talk about the जैसे मैंने बोला safety tips, especially the mental side of things, right? Not the physical driving, motorcycle riding skills में जैसे मैंने बोला मैं एक वीडियो उसके ऊपर भी बनाऊँगा. But certain things that we need to take care while riding, I thought of sharing based on my 23-24 years of riding experience. I thought of sharing that with you. Okay, तो सबसे पहले चीज़ मुझे जो ध्यान में आती है, the number one thing that comes to my mind, about riding is you need to be calm. Okay, you should keep yourself calm. Don't indulge in a road rage. 20% of the road accidents are actually happening in India. I'm talking about India, not other countries. In India, 20% of the road accidents actually happen because of some form of road rage, which is an astonishing. Look at this guy. I call these people jokers who actually ulta, the no entry में जो उल्टा चलाते हैं ना जल्दी पहुंचने के लिए, I call them jokers actually. So it's so beautiful, जब आप विलेज रोड्स पे आते हैं ना, look at these goats and sheep, so beautiful. मज़ा आता है। मैं ना उनके बीच में रोक देता हूँ, let them pass. Okay, so the first thing what I was trying to say is you should keep calm. Don't get into a road rage. किसी ने आपको overtake किया, see you will always have someone who has a superior bike to you. Okay, and हम rocket पे तो नहीं बैठे हैं, right? किसी ने overtake किया तो let him overtake. Okay, किसी ने कुछ बोल दिया तो let him go. You enjoy your ride. Because ultimately as a 20% जैसे statistics बता रहा है, मैं तो कुछ bluff नहीं कर रहा हूँ, statistics बता रहा है कि जब आप road rage, जब आप गुस्से में होते हैं ना, तो you make mistakes. So keep calm, number one. Number two, take breaks. If you are going on a long, छोटी rides है 3 hours 2 hours का तो ठीक है, but try to take a break every alternate hour, maybe
1.5 घंटे 2 घंटे में एक ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज योर माइंड बिकम्स फ्रेश। अदरवाइज यू डोंट नो कि आप देयर समथिंग कॉल्ड एज रोड हिप्नोसिस। आप गूगल करेंगे ना, आपको पता चलेगा रोड हिप्नोसिस करके कुछ होता है। आप बहुत टाइम तक जब चलाते हैं ना, सो आपका एनालिटिकल स्किल्स और एनालिटिकल माइंड जो है वो थोड़ा इनएफिशिएंट हो जाता है। इट डजंट परफॉर्म टू इट्स ऑप्टिमम लेवल, तो उसमें भी एक्चुअली एक्सीडेंट्स होते हैं। सो टेक ब्रेक्स as much as possible based on your comfort level, okay, but you should always take a break within 2 hours, okay. Don't ride more than 2 hours non-stop. Maybe even if it's a 5 or 10 minutes break, you should do it. Look at this, so beautiful friends. We are now climbing up the Khandala Ghats. यहाँ पे ट्विस्टीज़ करने को मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है ट्विस्टीज़। ये थोड़ा रोड तो अभी अच्छा कर दिया है इन्होंने, पर पहले जो रोड थे ना, वी हैड अ वेरी शार्प टर्न्स। आई एम ऑलमोस्ट डूइंग ट्विस्टीज़। मज़ा आता है, यू कैन राइड एट अ कंफर्टेबल स्पीड। रोड्स भी खुले रहते हैं। ये एक्सप्रेस वे पे बाइक्स अलाउड नहीं है, तो मेजॉरिटी ऑफ द कार एंड 4 व्हीलर ट्रैफिक वहाँ एक्सप्रेस वे से निकल जाते हैं। मोस्टली यहाँ पे 2 व्हीलर ट्रैफिक ही होती है। सो बहुत मज़ा आता है चलाने को यहाँ पे। सुबह सुबह को तो इतना मज़ा आता है ना। It gets a little colder as you climb up, and it's real fun, It's like mystery. It's mysterious, riding on the Ghats. इतनी खुशी मुझे आज तक। बहुत मज़ा आता है। Okay, so now that was taking breaks. So number 3, okay. The best thing is, if you are a newcomer, ride in groups, okay, or let a seasoned rider ride in front of you. You follow that ride. This is basically for the newcomers. Group में ride करने से क्या होता है कि आपको tips मिलती हैं। आप your fellow riders share experience with you, और आपको support भी मिलती है। Not only moral support, but sometimes physical support also. Suppose आपका कुछ हो गया, बाइक ब्रेक डाउन हो गई, या there's something wrong with your bike. If you are in a group, you learn faster, you get support, right? You learn faster, okay. So that's point number 3. So if you are a newbie, or if you just have started riding, try to ride in a group. There are so many groups now. Finding a group is not at all difficult now. It's a culture which is developed in India now, biking culture. Honda के groups अलग होते हैं, RE के groups अलग होते हैं। People get along, you make friends, you get to know people, okay. So there's so many benefits of riding in group, okay. That was point number 3. Point number 4 है कि keep yourself hydrated. आप है ना बीच पे पानी पीते रहो, okay. Because hydrated रहेंगे ना तो आपका mind भी fresh रहेगा, okay. You will feel less sleepy, you will feel less tired, lethargy कम होगी, fatigue कम होगा. If you are hydrated, concentrations naturally आपके अच्छे रहेंगे, which is again a safety parameter, right? So keep yourself hydrated. So whatever I am saying today, friends, is all mental side of things. I am not talking about the technical or bike riding skills. जैसे मैंने बताया, मैं एक पूरा वीडियो उसके ऊपर बनाऊंगा. So stay tuned for that video. Based on my experience, 23 years of experience on riding, I'll create a separate video just purely based on my experience, okay. And this video is also based on my experience. These things have helped me a lot, so I thought of sharing this with my fellow riders. That was the objective. Look at these Ghats, friends, so beautiful, right? So beautiful. These twisties are so fun, especially in the early morning. बहुत मज़ा आता है। Hness is so beautiful bike, just so beautiful. It's so smooth and refined that पता ही नहीं चलता, you're riding a motorcycle. Okay, now that was point number 4. Let's talk about point number 5. Point number 5 is try to keep a safer distance, okay,
एटलीस्ट मिनिमम 3 सेकेंड का डिस्टेंस रखो आप बाइक के पीछे. आई हैव सीन लॉट ऑफ राइडर्स जस्ट टेलिंग इन ऑन फास्ट कार्स, फास्ट बसेस, यू नो, और फास्ट इवन बाइक्स. वो काफ़ी क्लोजली एकदम चिपका के चलाते हैं, फास्ट चलाते हैं, प्लस बाइक के एकदम सामने वाली बाइक या कोई भी व्हीकल के एकदम ऑलमोस्ट उसके टेल को टच करने की कोशिश करते हैं. दे थिंक दे आर इन कंप्लीट कंट्रोल. नो, you can never, things can go wrong anytime and you will never even know about it. And bike is something that will punish you very badly. Okay, bikes are not dangerous. People say motorcycles are dangerous. No, motorcycles are not dangerous. मेरे को 23 years में आज तक मैंने crash नहीं किया. I've never had an injury, touch wood. So bikes are not dangerous, but bikes can be very punishable if you are careless. So they will punish you badly. You need to be very, 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 very careful. Okay, don't tail in on a rider in front of you. So keep that 3 second ka distance, or a safe distance, you know, maybe a few meters, at least few meters, so that you have a response time. If in case if he slows down or, you know, presses an emergency brake, you have time to react. So okay, so have some amount of safe distance. Just look at this. Wow, we have almost touched the top of the hill. We have almost reached Khandala now. We crossed the entire stretch जो आप देख रहे थे 5-10 मिनट से. That was all climbing up the ghats. Now we have almost reached at the top. You can see the valley on the left side. So now there will be a small patch of expressway, you know, where bikers are also allowed until Lonavala, and then they separate out. The 4-wheelers then go head on to Pune. So वो कुछ 5-7 किलोमीटर्स का ये होता है, कॉमन है. It's bikers also can ride. Okay, now coming back to point number 6. Now this might sound a little funny, but it has helped me a lot. Okay, it has really helped me a lot, and that is ride in rain. अगर बारिश में अगर आप राइड करते हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया आती है ट्रैक्शन ऑफ योर बाइक, ब्रेकिंग की आइडिया आती है, लीन एंगल्स की आइडिया आती है. ओके, बिकॉज रेन में आपको ऑटोमेटिकली आप केयरफुल हो जाते हो. ओके, सो यू ट्राई टू कंट्रोल योर बाइक, यू नो, इन एडवर्स कंडीशंस, एंड दैट एक्चुअली हेल्प्स यू in learning and knowing about your bike, you know, how it behaves, so on and so forth. So try to ride in rains. I'm not saying bhigo, hamesha bhig ke chalao, but sometimes, you know, if you once in a while just try to ride in a rain, it really will develop your skills. Okay, now point number 7 is अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. you should ride another bike. Okay, ये भी मैंने एक्सपीरियंस से सीखा है. आप अगर दूसरी कोई बाइक चलाएंगे ना, तो आपको काफ़ी आइडिया आएगी. आप सिर्फ अपनी बाइक चलाएंगे ना, तो आपको थोड़ा सा एक आपके बाइक के बारे में तो नॉलेज आ जाएगा, बट अगर आप दूसरी कोई बाइक चलाएंगे, सो यू विल ट्राई टू लर्न अ लॉट मोर. लीन एंगल्स, यू नो, कर्व्स पे, यू नो, ब्रेकिंग, you know, so on and so forth. So of course you cannot, if it is available, right, if it's available, try to ride another bike on and off, not always, but on and off if you can. So that also teaches you a lot. And last and not the least is maintain your bike as much as possible through your own hands. Okay, I'm not saying do your servicing, आप खुद की सर्विस बाइक की खुद करो, क्लीन खुद करो. नो, क्लीनिंग वगैरह ठीक है, यू कैन हैव पीपल अराउंड, बट समटाइम्स, यू नो, if you maintain your bike by your own hands, right, you will learn a lot about your bike. Okay, so ये एक पॉइंट था. और एक बोनस टिप मैं आपको देता हूँ. when in doubt, okay, slow down. It's actually a very very big mantra. मैंने किसी एक बहुत सीजन बाइकर से सुना था ये, कि when in doubt slow down. That means अगर आपको रोड आगे नहीं दिखाई दे रहा है, you know, विजिबिलिटी नहीं है, ट्रैफिक जाम दिख रहा है, राइट, यहाँ आपको रेंज में रोड्स का आइडिया नहीं है आगे क्या है, राइट, यहाँ थोड़ा ट्विलाइट है, इवनिंग का टाइम है या अर्ली मॉर्निंग है, सो कुछ भी डाउट आता है माइंड में ना, स्लो डाउन.
that's the mantra. Okay, so always it's really great mantra. I've actually learned a lot from that mantra. Okay, so those were 7-8 tips that I wanted to share, friends. Or now I've reached to a place, my favorite place in the whole world. This is a Tata Dam in Lonavala. I just keep coming here. I don't know why, but I just find a lot of solace here. So I, last time मैं यहाँ पे आया था तो this was a restricted place, but मैंने फिर भी पुलिसमैन से थोड़ा मस्का मार के उसने मुझे छोड़ दिया था. बट आज तो कोई है नहीं. There is no lockdown, there is no COVID, which is great, right? So this is now open and free for all. It's like a freedom, whenever you want you can come and sit here, spend time here. So this is one of my favorite place. I just love this place. Very, very peaceful, calm. Okay, and I really enjoy here. I spend at least an hour. I come here. I usually come here in the evenings, and then I go back to Mumbai. So I will leave you, friends, with some of the scenes from Lonavala, Khandala. और मुझे बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना. और मुझे खुशी होगी आपके लिए और भी ऐसे अच्छे वीडियोस लेके आऊँ. ओके, डू ड्रॉप इन अ कमेंट इफ़ यू एग्री, इफ़ यू डोंट एग्री, या आपको और ऐसी कोई टिप्स हैं जो आपने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं. डू शेयर सो दैट अदर फेलो राइडर्स can learn, can benefit from it. Okay, so take care and bye.